Hello and good morning everyone to the voice of. My name is Sip Hazra with the current affair daily current affair from the Indian Express. तो ये जो करंट अफेयर में डेली करंट अफेयर देखुचे इंडियन एक्सप्रेस रो दैट वन इज आम कहबा जोटा हमर भुवनेश्वर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस भुवनेश्वर रो आम देखे जोटा कि तुमर ओपीएससी एंड यूपीएससी बोथ पे हेल्प करिवो। तो आज जदि आम न्यूज देखा कालीर न्यूज तो मुझे करें जहाँ भी अच्छी आज खत्म करदेव कालीर बट आजटा मुझे फास्ट करदे जो अगस्ट 1 अगस्ट न्यूज टा मुझे कवर करदे। फास्ट आप देखिए गोटे डिवाइन आर्ट लिखाई तो आर्ट एंड कल्चर पार्ट जो आपको थे सिलेबस पेपर 1 रे था आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री जियोग्राफी आर्ट एंड कल्चर एंड सोसाइटी इंडियन सोसाइटी आसी था से आप लिखिपारे पट्टचित्र कौन पट्टचित्र कौन डायरेक्टली आप सर्ट क्वेश्चन आसीपे पट ताकू आम कहे पट्टचित्र कहले आम जो कोई लुगा उपरे मतलब आम कह सिंपल पाट उपरे चित्र करवा कहले पाट उपरे कॉटन लुगा उपरे चित्र करवा एंड दैट इज जगन्नाथ कॉल्ड दैट इज व्हाट जगन्नाथ कॉल्ड। तो ये जगन्नाथ कॉल्ड एसोसिएटेड पट्टचित्र जदि आम देखा दैट इज एसोसिएटेड विथ द जगन्नाथ कल्चर जगन्नाथ पेंटिंग करा जाए एंड दैट इज आम कह ब्रश पेंट कलर को नहीं करती खास करके पूरी डिस्ट्रिक्ट अधिक होता है एंड दैट इज कन्फाइंड टू द पूरी डिस्ट्रिक्ट्स। पट्टचित्र वन ऑफ द वर्ल्ड रेनोड पेंटिंग आम कह जोड़ा आमको ओडिशा देखा जाए विभिन्न एग्जिबिशन सेंटर लगी था पट्टचित्र। तो ये साधारणतः जगन्नाथ कल्चर उपर बेस्ड आपंकर पट्टचित्र जो थे पाट दरकार बा कॉटन लुगा दरकार एंड डिफरेंट नेचुरल कलर यूज करा जाए विथ द ब्रश टू मेक द जगन्नाथ विथ डिफरेंट फॉर्म्स। तो आगो को आम जा तो ये छोटिया गोटे न्यूज थी आपन पट्टचित्र उपर जोटा आप वैल्यूएडेड करें ना एथरे आपन जदि ओडिशार न्यूज देखुंत ताले ओडिशा को जदि आम कह दैट इज द बिजु स्वास्थ्य कल्याण योजनार किसी आपको दि जाइए आम कह डेटा एंड फैक्ट्स दि जाइए गवर्नमेंट तार प्रेजेंट करुँची 1 लाख बेनिफिशियरीज avail cashless care and that to be 225 crores every month खर्च होची कोथरु जोडे कि हमें कहबा फॉर द बिजु स्वास्थ्य कल्याण एनुअल कवरेज देखि दियंतु 5 लाख जो थे आपको केते लाख फैमिलीज बेनिफिट पाउछन्ते 96.5 लाख फैमिलीज कवर होची एनुअल कवरेज केते 10 दैट इज 10 लाख फॉर द वुमेन मान को 10 लाख आउ बाकी मान को 5 लाख रोची 700 प्लस हॉस्पिटल एथरे कौन करछन्ती जो माने कि एसोसिएटेड हिचुंती और अवेल होची एटा। देन बीएसकेवाई फैमिली हेल्थ कार्ड इज ऑटो रिनोड ए ऑटो रिनोड हेता विथ रेस 5 to 10 लाख ऑन द 1st सेप्टेम्बर एवरी इयर्स। ओके प्रत्येक वर्ष 1st सेप्टेम्बर एटा रिनोड हे जाय थे तन कर कि आज दैट मींस हमें कहबा जेहेतु हमें अगस्त सेप्टेम्बर 1st रे अछु तन कर ये न्यूज आपन को बहुत इंपोर्टेंट ऑटो रिन्यूअल हेता वुमेन्स 10 लाख एंड आम कह एनुअल कवरेज जोटा कि 5 लाख रही फॉर फैमिलीज रहिबो। तो ये केतेटा इंपोर्टेंट फैक्ट्स आपन बीएसकेवाई रु लिखि परिबे। देन आगो को जीवा जेतरा हम देखिबा ना हमर सबुठ इंपोर्टेंट कथा रह कि जीडीपी जदि हम देखिबा इकोनॉमिक्स रो हम देखिबा जीडीपी ग्रोथ रहिछि 7.8% इन द फर्स्ट क्वार्टर रे रहिछि। देन आसाम रो ऑन्कोलॉजिस्ट बा हम कहबा जो कैंसर स्पेशलिस्ट हम कहबा राम से जोटा कि रामन मैक्से से अवार्ड पाई जोटा कि फिलीपींस दियंती ताकू मध्य आगु को हम डिस्कस करिबा। सो लेट्स मूव ऑन। उड़ान प्रोजेक्ट ये ओडिशा रो इंपोर्टेंट न्यूज रही दैट मीन्स कलाहांडी रे फर्स्ट टाइम को एयरपोर्ट दैट मीन्स कलाहांडी रे मथे एयरपोर्ट करा गला दैट इज जहाकू कि दैट इज हम को अनवेल करिसंती on the presence of honorable union minister that is what that is Jyotiraditya M Scindia and obviously I would say honorable CM as well and that airport called is what Utkela that Utkela Kalahandi रा कोठी कहिछि कलाहांडी रहिछि Utkela to connect the capital city of Bhubaneswar सहित इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़िबो। तो कलाहांडी को जीवा पे ये सुविधा है जो मैंने जापे ना दैट इज अंडर द उड़ान प्रोजेक्ट दैट इज अंडर द उड़ान प्रोजेक्ट। तो जदि आपको ये क्वेश्चन आसीपे उड़ान तो उड़ान अंडर आमर दैट मीन्स ये उतकेटा हो गला कि आम राउरकेलार कथा नहीं जाओ अदरवाइज बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जोड़ा तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट कथा नहीं जाओ उतकेटा कथा नहीं जाओ मयूरभंज वन है तो वन इंडिया विल ऑपरेट फ्लाइट्स तो फ्लाइट को फ्लाइट एवं ऑपरेट कर वन इंडिया दैट मीन्स आम कहवा So civil aviation minister that is Jyotiraditya Scindia
एम्स इंडिया प्रेजेंस एटा हेछि तो विथ केटैब एयरपोर्ट बिजपटनायक एयरपोर्ट को कनेक्ट करिवो रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाइबो सिंपल उड़ान प्रोजेक्ट कोन थिला कि रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाइबा एंड that to be affordable cost and some seats would be that would be reserved for the udan project re kichi reserved raibo economical integration hobo economic activities will increase in that area communication will increase so that is why the udan is all about now एठी आपण इथिकल जदि आपण इथिक्स रे देखिबे ए पार्ट को आपण इथिक्स रे आपण पेपर 4 रे भी ऐड करि परिबे कि ट्रेन जो क्रैश है महानगर जो ट्रेन क्रैश हेतला दैट वाज वन ऑफ द व्हाट सैडेस्ट मोमेंट एवर इंडिया हैड एक्सपीरियंस्ड still now more than 28 bodies that there is no taker that means nobody has come forward to take that bodies might be that is not identified बाकी हमें इंपोर्टेंट न्यूज देखि देबा जहाँ एग्जाम पर्सपेक्टिव हमको दरकार हाँ ये हमारा जेहेतु मॉनसून ए वर्ष बहुत ही खराब चलची नेगेटिव मॉनसून चलची तो अगस्त पेन फॉर ओडिशा as the drought fear looms large at large so that means हमें अगस्त मास रे देखबा डेफिसिट रेनफॉल it was June it was July now August now what happened June मास रे हितला डेफिसिट रेनफॉल नेगेटिव रेनफॉल जुलाई रे थिला पॉजिटिव रेनफॉल बा सरप्लस and August again negative rainfall. So back to back, I mean, in the last 3 months, 2 months has recorded negative rainfall. In Odisha रे जदि हमें देखिबा the because of what El Nino condition, the El Nino condition रे कोन होए negative rainfall हिथाय बा rainfall कम हिथाय. सो जदि हमें देखिबा जो अगस्त मास रे डेफिसिट रेनफॉल हिची आईएमडी मध्ये कहिसंती एंड ओडिशा जदि हमें देखिबा ओडिशा रे अगस्त मास रे एथरो मध्ये कोन हिची हमें कहबा नेगेटिव रेनफॉल हिची द एक्सपर्ट सेज दैट इवन दो द रेनफॉल्स नॉर्मल हेई पारे जदियो सेप्टेम्बर मास रे रेनफॉल कोन हिची नॉर्मल हिथाय बट से भरपाई करि परिबो नाही अगस्त मास रे करि परिबो नाही सो दैट मीन्स हमें कहबा many parts of the Odisha they are going to face what severe drought it's not about Odisha it's about Jharkhand Chhattisgarh Bihar Eastern UP Maharashtra Andhra Pradesh so these are the many states there but suddenly I will say they are uh, reeling under the drought condition and Maharashtra already that is the what Marathwada Rayalaseema Karnataka Kerala even Kerala in the 113 years more than 100 years the Kerala KBP last 100 and 113 years has never experienced that what the drought or I would say the deficit rainfall in the month of August. Even the Kerala has experienced the deficit rainfall, which is also a cause of concern. So if the Kerala is experiencing, then what will happen to the other? So that means like the same saying also happening to Odisha and like the Navarampur, you can see the Kendrapada districts, Navarampur districts, okay, even Ganjam, 3 districts, Ganjam, Navarampur, Kendrapada recorded the highest deficit rainfall 46%, 45%, and 44%. So these 3 districts they have the lowest rainfall recorded and the highest deficit has occurred in this. तादरा कौन हबो जो हमारे agriculture बा हम खरीफ crops that is good. बट हार्डली हिटेड हमको हार्ड हिटेड एग्रीकल्चर होची तेणुकर बहुत ही ज्यादा हमको प्रॉब्लम देखा जिवो आर वर्ष मध्ये बहुत प्रॉब्लम हो बिकॉज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन भी डिफिकल्ट हेजिवो हिराकोत रे जदी पानी ठीक से न होला जब हमके बाद दैट विल आल्सो कॉस्ट ए माने से भी मध्ये गोटे प्रॉब्लम करिवो पावर सेक्टर पे एंड पावर कट मध्ये अधिक हेई पारे तेणु ये भी गोटे हमको चैलेंजेस हमको आगो को देखा जाई पारे फूड इन्फ्लेशन बढ़ी जिवो माने काना हमर सप्लाई कमिले इन्फ्लेशन बढ़ी जिवो तो बहुत सारा हमको देखबा दैट मींस हम कहबा सो द हॉटर डे हमके देखबा जो हमको बहुत एबे देखबा टेंपरेचर देखो 37 डिग्री अगस्त रे टेंपरेचर अगस्त 31 रे 37.5 दैट मीन्स हमें सिंस 1951 पर सब हटेस्ट डे अगस्त मास रेकर्ड करा जाउची तो ये भले टेंपरेचर अधिक रहउची एंड दैट मीन्स रेनफॉल होनी टेंपरेचर बहुत ही ह्यूमिडिटी बहुत रहउची बट रेनफॉल होनी दैट मीन्स हमको कोन देखाउची डेफिसिट रेनफॉल हाई टेंपरेचर देखा जाउची ये सब फैक्टर्स हाँ आउ गोटे जिनस आप लिखिपारे
कि एक्सपोर्ट माने कहवा कथा कि इंडियन ओशन रे पॉजिटिव फेज चलची, इंडियन ओशन डायपोल रो पॉजिटिव फेज चलची टू न्यूट्रलाइज द एलिनो इफेक्ट को, बट दिस इज इन व्हाट मो कहबी स्पेकुलेशन। तो तेणुक डेफिसिट रेनफॉल गोटे कज ऑफ कंसर्न हो सारी बहुत ही आम कह मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर आगे को जाकि चाहे से मु कहबी कौन आमर फॉर एग्जांपल मुझे फूड इन्फ्लेशन कथा नहीं जाओ, फूड इनसिक्योरिटी कथा नहीं जाओ, तुम टोटल फार्मर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कथा नहीं जाओ, बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट करिवो। देन आम देख क्रोकोडाइल फियर्स तो ओडिसा रे चलची, बहुत सारा जान चारि महान मध्ये ये कनसेप्ट आछि। दैट मीन्स आम देखा जब कौटी ना ये कहुई जे जगतसिंहपुर आमर कुजंग डिस्ट्रिक्ट कुजंग देखा चौमुहाणी, तो चौमुहाणी ये देखाई कि क्रोकोडाइल बहुत सारा क्रोकोडाइल देखा चौमुहाणी रे, महानदी में क्रोकोडाइल्स देखा तेणु महानदी जो मैंने भावुच कि क्रोकोडाइल ना, तो महानदी में क्रोकोडाइल आसी जाइए। तेणु कुजंग बका बगरा कि आम कह जो एपट एरिया लोक सतर्क हो जातु, कहीं महानदी आगु कुंभीर नाला, बर्तमान कुंभीर आसीगला। सुंदरगढ़, सुंदरगढ़ आगे अगेन सेम आसी, दैट मीन्स आम देखा सेम तुम जो रेनफॉल प्रॉब्लम चली चारिड़े जदि आम देखा द फार्मर्स द पैडी कल्टिवेशन हैज टेकन 1,95,860 हेक्टर्स विथ 2.1 लाख हेक्टर्स आम कह आउट ऑफ, कारण वर्षा ना जेहेतु वर्षा ना कम एरिया चाष होती, अनदर 10,000 हेक्टर्स कुड हैव बीन कल्टिवेटेड बाय नाउ, बट हो पार ना कारण जेहेतु रेनफॉल कम हो। सुंदरबन को कहुए राइस, दैट मीन्स आम जो सुंदरगढ़ अच्छी ना, सुंदरगढ़ आम रहा तो बहुत सारा राइस वेराइटी प्रोडक्ट होता है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द स्टेट। बट कौन करवा ना आम जेहेतु रेनफॉल कम हो, तेणुक जो टोटाल आम जो एग्रीकल्चरल एरिया अच्छी तार दैट मीन्स कल्टिवेबल एरिया आमर कम एरिया चाष हो बिकज ऑफ दैट फैक्टर्स। ओके, तेणुक आम कह चाष बहुत ही प्रेसर पड़े वर्ष आम एंड द फार्मर्स आर रियली दे आर फेसिंग प्रॉब्लम बैक टू बैक आमको देखा, तो ये द्वारा प्रॉब्लम्स बहुत हो। ना केरला जो कथा मुझे केरला विटनेस द ड्राएस्ट अगस्ट ओवर 100 इयर्स, तो ये भी आप लिखिपारे क्वेश्चन कि केरला मतलब लास्ट आम कह जब हिस्ट्री रे 100 वर्ष होगा केरला एभलिया डेफिसिट रेनफॉल के एक्सपीरियंस करे नहीं, तो ये गोटे आम लिखिपर। ना कम्स टू द आर्टिकल्स को आसवा, तो आर्टिकल्स फर्स्ट आर्टिकल को फिस्कल प्रुडेंसी, फिस्कल प्रुडेंसी को आम ये मस्ट करवा एंड डिफरेंशिएट बिटवीन द फ्रीबीज एंड वेलफेयर रेजिम। ये कौन दैट मीन्स फार्मर्स, दैट मीन्स चीफ जस्टिस एन भ्रमण लास्ट ईयर से गोटे केस को जिते इरेशनल फ्रीबीज जजमेंट दौले, तो से कौन कहले कि फिस्कल प्रुडेंसी कौन, प्रथम कथा फिस्कल प्रुडेंसी मीन्स टू इम्प्रूव द फिस्कल डेफिसिट को इम्प्रूव करवा और टू रिड्यूस द फिस्कल डेफिसिट सो दैट द गवर्नमेंट विल बी ए हेल्दी गवर्नमेंट and the healthy fiscal system of the nation, and that will attract more investment and a prudency would be there. So say digare jodi ami dekhiba, but the freebies and welfare regime, freebies I would say, because of the freebies the political parties they engage themselves in the I would say but distributing the different freebies, that leads to what kind, that leads to the widening of the fiscal deficit, and the fiscal prudency are really hurt by that। हेतिपई कौन कराउची कि जदि आम देखा एक्जाक्टली व्हाट एक्जाक्टली द फ्रीबीज एंड वेलफेयरिज्म, बिकॉज तुम जानते डीपीएसपी टॉक्स अबाउट व्हाट, दैट मीन्स द डीपीएसपी टॉक अबाउट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट्स व्हिच टॉक अबाउट द वेलफेयर स्टेट। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट and the socialism is one of its basic principles of the constitution, but that does not means कि freebies, the freebies कौन exactly, freebies माने जमते मागना रे देइदो, free electricity, free ration gas, these are the freebies, but government कुए ताको these are not freebies, these are welfare
programs ତେଣୁ କରିକି there must be ଗୋଟେ welfare program କ'ଣ freebies କ'ଣ ତାର ଗୋଟେ certain definition ବାହାର କରନ୍ତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କି this is the scheme and ଆମେ welfare scheme this is freebies so that କ'ଣ ହବ ନା ଆମର ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିବ କି it would be ଆମେ କ'ଣ freebies କ'ଣ ଜାଣିପାରିବା ବା welfareism କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା otherwise କ'ଣ ହେଉଛି ନା freebies କୁ ଆମେ welfareism ବି କହିପାରିବା और आम वेलफेयरिज्म को भी फ्रीबीज कहि परिबा सो दैट गोटे कोन होची क्लास होची तन करी फॉर एग्जांपल ये स्टार्ट हितला केबे जेमति कि एनटी रामाराव सेतलो कोन कहथिले तमिलनाडु जो हमर थिले दैट मीन देन तमिलनाडु सीएम दैट इज अन्ना दुराइस प्रॉमिस कहथिले राइस 1 रुपी रे देबे तो ये फ्रीबीज को टू स्टार्ट हितला तमिलनाडु स्टार्ट हितला इन द 60s दैट मीन 60s रे स्टार्ट हितला तमिलनाडु देन सीएम दैट इज अन्ना दुराई प्रॉमिस कहथिले के टंकाटार राइस दिया जिवो तो ये जो कांसेप्ट एबे हम देखिबा कर्नाटक इलेक्शन रे देखिबा नावे सिलेंडर 200 रुपीस सब्सिडीज मिल गेला तो एमिति चली दिल्ली गवर्नमेंट को फ्री इलेक्ट्रिसिटी फ्री वाटर फ्री अमुक टमुक सो दिस फ्रीबीज ना ये फ्रीबीज चली तेणु फ्रीबीज द्वारा कौन गवर्नमेंट पर फिस्कल बर्डन बढ़ुची कौन फिस्कल बर्डन इज इंक्रीजिंग ऑन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीजिंग गवर्नमेंट देबालिया हो है ना तो तेणु करके कोठी ना कोठी गोटे फिस्कल प्रुडेंसी एंड प्लस एफआरबीएम जो एक्ट अच्छी दैट इज आल्सो वायलेटेड 100 टाइम्स मु कहबी से वायलेट होची तार टारगेट को हम अचीव करि पारु नै बारंबार एफआरबीएम एक्ट को अमेंडमेंट करिया को पडुची है ना 2003 रे असला एफआरबीएम एक्ट ए मध्ये तुमको क्वेश्चन रे बहुत थोर पचारची फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट ये मध्य बहुत थोर वायलेट हेलानी बिकॉज हमर फिस्कल प्रुडेंसी अटेंड हेई पारु नहीं तो अकॉर्डिंग टू एफआरबीएम एक्ट फिस्कल प्रुडेंसी मस्ट बी 3% 3.3 एंड 3.5% रहिबा दरकार किंतु वर्तमान जदि हम देखा फिस्कल डेफिसिट मोर देन 6% ऑफ द जीडीपी तो तणु करे जीडीपी रो एटलीस्ट कहते 3% रहिबा दरकार किंतु फिस्कल प्रुडेंसी अटेंड हेई पारुनी बिकॉज ऑफ द फ्रीबीज एंड वेलफेयरिज्म प्रोग्राम्स गवर्नमेंट रो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बहुत होची एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर कमी जाउची तो सिंपल हम जदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कमीबा कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ेबा आउ दैट मीन्स एंड रैशनलाइज कर दो सब जिंस को सो दैट इट वुड बी व्हाट हम याको कोन कहबा ना इट वुड बी ए जाको हम कहि परबे कोन फिस्कल प्रुडेंसी वी कैन अटेन दैट फिस्कल प्रुडेंसी देन हम देखबा दैट मीन्स स्किल्ड लेबर एंड बॉयंट सर्विस ग्रोथ पॉइंट तो बर्तमान हम देखो फास्ट क्वार्टर ऑफ द जीडीपी रिलीज हे साइज 7.8 ग्रोथ रही फास्ट क्वार्टर ऑथर कहवा कथा बाय एडिटर रे हम देखिबा द इंडियन एक्सप्रेस सेज कि जदी इफ यू वांट्स टू सस्टेन दैट ग्रोथ यू नीड टू हैव ए स्किल्ड लेबर एंड बॉयंट सर्विस सेक्टर को ग्रो करिबार अछि जदी सर्विस सेक्टर ग्रो करूची एंड वी विल हैव द स्किल्ड लेबर टू प्रमोट दैट we can sustain that 7.8% and India is one of the bright spot in this stage, in the gloomy stage of the world economy, and it's a bright spot. That means including China, USA, Germany are other witness slow down. Sub countries slow down, but India is but rising. India is rising. India is in a bright spot. Other large economy like the Germany, US, China, they are what facing the slowdown, and the headwind is going on around the world. Headwind means what? Headwind means global slowdowns. So that would be summary. Then I go to Amijiba. Yes. Record August rainfall deficit hit the crops production. जोटा मु already कहि that means हमरो कोन थिला it was June month the 9% deficit थिला July 13% surplus rainfall was then now in August again 36% deficit rainfall and August मास रे सबटु कम rainfall होइछि last 100 years रे in last 100 years India has never experienced such a huge amount of rainfall deficit in the month of August and August is exactly known for the high rainfall but jodio IMD predict karuchi that September month will have pretty good rainfall but that would not fulfill or that one would not able to recover the 36% of the rainfall deficit in the July. तनकर ये गोटे बहुत ही खराब मानसून सीजन इट इज वन ऑफ द वर्स्ट मानसूनल सीजन इंडिया हैज एवर एक्सपीरियंस्ड सिंस 1991 okay so what will happens is that तो आ द्वारा कोन हबो that means the lowest heating deficit हमको देखा जबो so that what will happen is the driest season the total crop production will harms like I would say the Maharashtra like the Rayalaseema region the Marathwada region Karnataka region, Kerala, Lakshadweep, Gangetic Plain, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Uttar Pradesh, they have
received what, that is the 1/3 out of 36 subdivision of the countries reported that is what, huge rainfall deficit. The huge rainfall deficit से कौन हो परिबो, टोटल क्रॉप प्रोडक्शन ये कम हो जाएगा, तो फूड इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, फार्मर्स इनकम जो डबल करना था वो कहीं ना कहीं वहां पर हो जाएगा, एंड ओवरऑल द हीट वेव्स विल प्रिवेल्स एंड द हीट impact would be there, so crops might be, pest attack might be there, so there are so many what I would say the repercussion is going to be. So IMDC is the major reason behind the August dry region because of the El Nino and unfavorable Madden-Julian oscillation. So what exactly that the El Nino? El Nino is a warm current which prevails in the South American coast of Peru and Chile, which causes one of the monsoon and the Indian monsoon do severe affected through the that one, and also the Madden-Julian. Madden-Julian is an oscillation or some sort of a, what I would say, a low pressure that oscillate from west to east. That also do cause the rainfall of the Indian subcontinent. That's also not happening now, though Madden-Julian also not happening now. So it's an unfavorable condition is going on, and India is hard hit monsoon since last 1991. So it's a very difficult situation for the farmers and for the India as well. Here, one thing good news is coming for you, that more than 10,000 e-bus is going to roll on the road through the PM, through the what, that is the PM e-bus Seva. It's a PPP model, public-private partnership model. 10,000 e-bus is going to roll over on the roads, and which will reduce PM10, PM particulate 5, and this. So total production of the greenhouse gases will be reduced. PM10, PM5 will reduce. Okay, what would be the cost of transportation? Per kilometer, it would be 20 to 40 rupees per kilometer. The Union Cabinet approved this scheme with 20,000 crore allocation. Okay, the rest of the money would be borne by whom? That is the state government. So total money would be spent 57,613 crore, out of which 20,000 crore would be provided by the central government, and the rest would be done by the state government. Okay, so what will happen? That we will move to a more greener transportation system. We will achieve to hold the rising temperature below 1.5 degrees Celsius according to the Paris Agreement, and NDC, National Determined Contribution, that we may achieve that one. Also, we are having other target like the 2070 carbon neutral. India would be carbon neutral. So these are the many objectives are there, and Panchamrit also there, if you could remember that one. So that is why India is moving forward to achieve, that is the what, national determined contribution. So that is one of the major, you can write in the what environmental section as well. So that is the paper 3. So this one 10,000 verses in the part of paper 3. Now this one, this person is now in news. This is because of the preliminary news to Masipare and the governance paper. Magsaysay award is now given to the what, the son of IAF officer from the Tamil Nadu, Assam, oncologist. The person is Ravi Khanna. That is Ravi Khanna, oncologist or the senior, that is the fellow of the cancer department, and what in the what, that is the Kachar Cancer Hospital Research Center, Assam Kachar. This person has got what, that is the Raman Magsaysay Award, which was on the name of former Philippine president, started in 1957 on the good governance. The award is given in good governance and the good act as well. The last Indians who got this award was TV journalist Rabish Kumar in 2019. So this person, this award is given for what, individual for the contribution towards the integrity in the governance, public services, pragmatic idealism within the democratic society. So this also promote, that is the democracy and individual excellency. So this award is given on the name of the former Philippines Prime Minister, President is Raman Magsaysay. So this is also important. बाकी खास न्यूज नहीं, yes, one
इस न्यूज इंपोर्टेंट इकोनॉमिक न्यूज रो जति हम इकोनॉमिक्स देखि देबा फिस्कल डेफिसिट बढ़ी जाई छी 80% to 6.1 lakh crore in the April and July. The fiscal deficit बढ़ुची India रो fiscal deficit बढ़ुची 80% jump ହେଇची. That means it's growing fast. कारण election approach करूची. As the election approaches, the fiscal deficit will widen because of the freebies and more subsidies, more schemes. So revenue expenditure is going to more than the capital expenditure. To ensure that means the surge of the fiscal deficit because of the what higher revenue deficit and the capital expenditure. Capital expenditure is increasing and highly revenue depreciation. The contraction in the net tax collection. So what are the reason is that why fiscal deficit is increasing in India. The point one is that fiscal deficit बढ़िबार कारण revenue expenditure बढ़ुची, capital expenditure बढ़ुची, contraction in net tax collection. That is why तेणुकर एटा मन रखो इलेक्शन बेले कहीं बढ़े बिकॉज ऑफ द फ्रीबीज ना कोर सेक्टर के ऐसे कोर सेक्टर है कोल क्रूड ऑयल स्टील सीमेंट इलेक्ट्रिसिटी फर्टिलाइजर रिफाइनरी प्रोडक्ट नेचुरल गैस ये है कोर सेक्टर जार ग्रोथ है 8% इन जुलाई कोर सेक्टर जदि ग्रोथ होची ओवरऑल इकोनॉमी रो ग्रोथ होता है तेणुकर ये कोर सेक्टर तुमको प्रीलिम रो क्वेश्चन पचारि थाए. That means the April July रे core sector हमें growth देखी परिबा. The core sector growth होची which is include that is the coal, crude oil, steel, cement, electricity, fertilizer, refinery and natural gas. ये था इकोनॉमिक. सो आज हमें ऑलमोस्ट हम देखी सारे है ना रशिया रू क्रूड ऑयल इंपोर्ट हमर फॉल हे जेची बाय 20% इन अगस्त तक मध्य टिके देखि देथिबो बस खाली एतिक मन रखिथिबो आउ किछि करिया दरकार नै. So this would be the end of this session. Thank you everyone for watching. Don't forget to like, comment and share this video. Thank you everyone. Have a great day to all.